Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on chapter number 13, Energy and its Resources, and today I will deliver its 8th lecture. And today is the review of chapter number 13. यानी कि हम ये चैप्टर के तमाम स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं. सो टुडे I will give you a complete review, a revision of this chapter. But before that, let's quickly recap what we did in the previous lecture. So what are the different sources of energy? Sun, wind, water, coal, oil, gas. These all are natural energy sources. So how can we use different energy sources? So we can use heat and light of sun to generate electricity. We can use wind energy to generate electricity. We can use water to generate electricity. We can use coal, oil, and natural gas for different purposes, like for our vehicles, fuel, for cooking, for heating. So these are different ways in which we use these natural sources. So my dear students, these are the student learning outcomes that we have covered in this chapter so far. So the Islamic perspective, eat and drink but waste not, by excess, for Allah loved not the wasters. So my dear students, हम इतने सारे resources या sources हैं हमारे पास energy के और चीज़ों के अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए. सो हमें चाहिए कि हम इनको एहतियात से इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और चीज़ों को वेस्ट ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला ज़ाया करने वाले लोगों को पसंद नहीं फरमाते. So my dear students, let's start the review. So in the first lecture, we recognized that energy is required for doing work. So for living things, non-living things, plants, animals, human beings, everyone needs energy to perform different work, to move. So they need energy. So what is energy? Energy is the ability to do work. ठीक है? Human beings or animals जो हैं, they need food for energy. Plants need sunlight for energy, and non-living things, they need external energy, यानी कि उनको बाहर से कोई energy source चाहिए होता है जिसकी वजह से they can move or perform work. So energy is the ability to perform work or to do work. So next was identify natural sources of energy like sun, wood, flowing water, coal, oil, and gas. So we discussed one by one about the different energy sources, natural energy sources. We discussed about sun, wood, flowing water. So natural source of energy is sun, wood, flowing water. So all of them have certain type of energy जिसकी वजह से जिसको हम use करके और different forms of energy जो है वो generate करते हैं ताकि हम उनको daily basis पे use कर सकें. So हमने इसके बाद sun को यूज़ किया, wood को यूज़ किया, water energy के बारे में हमने पढ़ा, हमने coal और oil के बारे में पढ़ा कि कैसे जो है ये energy produce करवाते हैं, हमारे vehicles में यूज़ होते हैं. और क्योंकि आपकी vehicle या आपकी जो गाड़ी है ये non living है और उसको move करने के लिए या work करने के लिए energy क्या चीज़ देती है? Fuel. And this fuel is a natural source और ये हमें ज़मीन से मिलता है. So understand that sources of energy are used for many things: move an object, heating, lighting, transportation, electric appliances, etc. So ये जो different energy sources हैं इनको हम मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चीज़ों को मूव करवाने के लिए, हीट जनरेट करने के लिए, लाइट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को चलाने के लिए, आपका फ्रिज, टीवी, एसी, ये सब चीज़ें एनर्जी से चलती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलती हैं. और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये किसी ना किसी तरीके से जनरेट की जाती है कोल से, ऑयल से, पानी से, विंड से, सोलर एनर्जी से. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यूजेस ऑफ एनर्जी हमने पढ़े. इसके बाद नाउ इज द टाइम फॉर प्रैक्टिस. नाउ आई विल evaluate you through this worksheet which you can download from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, you have to answer some questions so that I can evaluate you कि आपने कितना जो है इस चैप्टर से सीखा है. So what is energy? You have to define energy. Then enlist the sources of energy. हमने different sources of energy पढ़े हैं, उनके नाम लिखे. What type of energy does sun provide? सन के पास कौन सी एनर्जी होती है जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. हाउ कैन वी यूज वुड एज एनर्जी. वुड से आप कैसे एनर्जी लेते हैं.
हाउ वाटर एंड विंड हेल्प अस टू अवेल एनर्जी, पानी से और हवा से आप कैसे एनर्जी ले सकते हैं. व्हाट इज कॉमन यूज ऑफ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, इन तीनों का क्या नेचुरल कॉमन यूज है, कहाँ पर ये यूज होते हैं. व्हाट आर द यूजेस ऑफ एनर्जी सोर्सेज, डिफरेंट जो एनर्जी सोर्सेज के यूजेस हैं जो हमने लास्ट में इस चैप्टर में पढ़े थे उनके आपको नेम्स लिखने हैं. सो दिस इज वेरी इजी. रीड आउट द क्वेश्चंस very carefully and then answer them. Pause the video and complete the worksheet. Submit this worksheet to your teacher for grading and evaluation. Now we will move forward towards your homework. So my dear students, discuss with your parents the importance of energy and energy sources in our life. So आपको अपने पेरेंट्स से डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज के बारे में बात करनी है और फिर उनकी हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है आपको उनसे उनके बारे में भी डिस्कशन करनी है. सो लेट्स सी कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन में इजाफा कीजिएगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स टाइम फॉर रैप अप. सो नाउ ऑल द स्टूडेंट्स आर एबल टू टेल दैट एबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी. Sun, wood, water, flowing water, wind, coal, petroleum, oil, and natural gas are natural sources of energy. And ability to move, transportation, movement, electricity, and uses of energy sources. So, my dear students, हमने different फायदे पढ़े एनर्जी सोर्सेज के, डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज के नाम पढ़े, कैसे जो है वो एनर्जी जनरेट की जाती है. हमने प्रोजेक्ट्स भी इसके ऊपर किए. हमने एनर्जी क्या है लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, इस पर भी हमने बात की. आई होप बाय नाउ यू नो व्हाट इज एनर्जी एंड हाउ वी कैन जनरेट इट एंड हाउ वी यूज इट. So my dear students, keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.